It's okay to make mistakes, to have bad days, to be less than perfect, to do what's best for you. What comes to our mind when we say mental health? Depression, depression, and depression. But depression isn't only thing that happens due to mental imbalance. Anxiety, fear, feeling lonely, feeling lazy, lying in bed, eating too much or too little, addictions, may it be drugs, taking alcohol, or scrolling through your IG feed over and over again, mood swings, getting angry and then acting weird at the same time, and feeling like something is missing. See, guys, unhappiness and depression comes when you focus on what you don't have. But just think and tell me that is the problem that you are facing the biggest one in this world, that it forces you to take such bad steps? We are hearing many news about depression, drug addiction, suicide attempts, or even committing suicides. Rather than thinking of committing any bad step, just commit to do something that will change your life. I am just wondering कि साला इतना दम आता कहाँ से हम लोगों में कि डायरेक्ट खल्लास. अगर सही में दम है ना तो बदल के दिखाओ, खुद को भी और इस दुनिया को भी. है दम? बोलते हो रिस्क का काम है, रिस्क लेनी ही है ना तो कंफर्ट जोन के बाहर, इन सब प्रॉब्लम्स के बाहर आके लो. लाइफ क्या होती है और जीना किसे कहते हैं समझ जाओगे. If you think you yourself are a problem to your life, then to be honest, the solution to this problem is just one thing. That is your own self. लोखंड पता है ना? Iron. No one can destroy iron, but its own rust can. Likewise, no one can destroy a person, but his own mindset can. Why are you letting people to decide your life and to judge you on one or the other thing? क्या ठेका लेके रखा है क्या उन्होंने तुम्हारा, या कुछ अग्रीमेंट साइन किया तुमने उनके साथ कि भाई मैं कुछ करूँ तो मुझे रोकना और कुछ ना करूँ तो मुझे टोकना. सी, आई एम नॉट सेइंग यू टू अवॉइड पीपल और अवॉइड पेन. पेन, sufferings and failures are a part of your life. Every single person go through this phase. Just the difference is कुछ लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं as compared to others, but we all suffer at some level. The biggest problem in our society is that we try to mask and hide the problems. Instead of hiding the problems, can't we fix it? Why are we choosing to live in that pain? Can't we move on? See, you all deserve to move on. अभी जैसे नए मोबाइल्स में बैटरी इनबिल्ड रहती है, क्या आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी आप में इनबिल्ड है? No guys, your mental strength comes from the struggle, the sufferings and the pain that you have experienced and gone through. आपकी मेंटल स्ट्रेंथ तभी बढ़ेगी जब आप सब डटे रहोगे और पीछे नहीं हटोगे. That is when you will refuse to give up. The next thing is, talk to your loved ones. Just open up to them and share your feelings. You know all the answers to your questions. You don't need any solutions. You just need someone to hear your thoughts. तुम्हारा कोई खास दोस्त या कोई जो तुम्हारे पास का व्यक्ति हो, उनके साथ शेयर करो तुम्हारे सारे फीलिंग्स या थॉट्स. या फिर कोई भी नहीं मिला ना गाइस, तो तुम्हारे मॉम डैड है ना, क्यों समझते नहीं हो तुम भले ही उनके लिए जीते नहीं होगे और वो ज़रूर तुम्हारे लिए जीते हैं. क्यों शर्माते हो फिर? दैट्स कम्प्लीटली ओके गाइस. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग. बच्चों से लेके बड़ों तक सब तरफ चलता है ये कंपैरिजन. सी, देयर्स अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन एंड कंपटीशन. कंपटीशन आपको सिखाता है और कंपैरिजन आपको दुखाता है. द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ do not compare themselves to others. They run their own race. मैं ये नहीं बोल रहा कि they have the best of everything. They make the best of everything. So just get up and conquer your dreams. No one here to stop you. Just hustle hard. Take care. Be healthy. Thank you.